सुप्रभात। यू, मी और हम, सवालों से जवाबों तक के इस सफर में मैं राघव राज और मैं सीरज गुप्ता डीएवी आर्यवा आर्ट क्लब की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आप सभी को रूबरू करवाने जा रहे हैं, उन्होंने भी इन्हीं हौसलों के दम पर इस मुकाम को हासिल किया है। तो आइए स्वागत करते हैं हम सभी के समक्ष R.B.DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल बठिंडा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुराधा भाटिया जी को, और एक साक्षात्कार के जरिए जानते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनमोल पलों को इन्हीं की जुबानी। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, एक बार फिर से डीएवी आर्यवा आर्ट क्लब की पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। बचपन के खिलौने सा कहीं छुपा लूं तुम्हें, बचपन के खिलौने सा कहीं छुपा लूं तुम्हें, आंसू बहाऊं, पैर पटकूं और पालूं तुम्हें। तो मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी की शुरुआत हमारे बचपन से होती है, उसी प्रकार हम इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके बचपन के बारे में जानने से शुरू करना पसंद करेंगे। If I talk about my childhood, it was really amazing. I enjoyed my childhood very much because I was the youngest sister. Like, I got my two brothers. They both are elders to me, and I was the favorite child of my parents. They used to pamper me a lot whenever I used to do any kind of mischief. But everyone was just taking my side because I was the cutest one. As well as everyone was adorable, like they were thinking that I am the adorable most, so that is why my childhood was amazing. So I really enjoyed. Like, if I talk about my mother, she used to make special recipes for me, and I was the one to whom she used to call ki Anu, this we have made for you, you taste, then other members will taste. So I enjoyed that also, and the liberty was always given to me. My elder brothers, sometimes, as siblings, we quarrel also. We had quarrels, but later on, they only got the scoldings. I was always at the safer side. So it was amazing experience. तो मैम, अलादीन की कहानी के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे उसे एक चिराग के जीनी के द्वारा 3 विशेष मांगने का मौका मिला था। मैम, अगर वही चांस आपको मिले तो आपके 3 विशेष क्या होंगे? I really wish to. I would like to meet Aladdin. We have always heard about the stories of Aladdin, but अगर मेरी लाइफ में अलादीन आ जाए तो 3 विशेष अगर मुझे मांगनी है तो सबसे पहले तो I would love to relive my childhood because as I told you it was amazing. And second wish, I would love to travel almost all world because I'm very adventurous and I would like to visit so many new places. I would like to relive the culture of different countries. So, and the third wish, God has given me everything. I'm very lucky. So, still, the world in which we are living, I would love to have the peace and happy environment around. आई विश कि मैं जहाँ पर भी रहूँ, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं मुझसे कनेक्टेड हैं, वो सब खुश रहें और बड़ा हैप्पी एनवायरनमेंट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे। मैम, अगर आपको मौका मिले किसी भी एक्सपीरियंस या मेमोरी को फिर से रिलीव करने का, मैम वो मेमोरी एक्सपीरियंस कौन सा होगा? मेमोरी अगर रिलीव करनी है तो आई टोल्ड यू इट्स नॉट दैट ओनली माई चाइल्डहुड वॉज अमेजिंग, लाइक ऑल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ वॉज अमेजिंग, बट चाइल्डहुड इज रियली स्पेशल व्हेन यू डोंट हैव मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सिर्फ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपका अकेडमिकली आप स्ट्रांग होने चाहिए बिकॉज टीचर्स आपको तभी ज़्यादा प्यार करते हैं। और तो मैं अपना चाइल्डहुड ही रिलीव करना चाहूँगी क्योंकि जो टीचर्स ने मुझे कंसर्न दिया उस टाइम, जो प्यार दिया, जो कोऑपरेशन दिया, तो वो बाद में लाइफ में हम बहुत कुछ सीखते हैं ग्रेजुअली, बट जो वो बचपन की यादें हैं, मतलब जब टीचर्स आपको इतना एडोर करते हैं, इतना प्यार से समझाते हैं और आपको अच्छा बनने के लिए प्रेरित करते हैं, दैट इज रियली गुड। तो आई वुड लव टू रिलीव माई चाइल्डहुड। मैम, हम यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं कि मैक्सिमम टीचर्स टीचिंग फील्ड में बाय चांस एंटर होते हैं, तो आपने टीचिंग फील्ड या कहीं एजुकेशन फील्ड को बाय चांस एंटर किया या बाय चॉइस? Initially by chance, but later on by choice, because I wanted to work in MNCs. So, but my father was not that much interested. I got selected also in one of the biggest MNC, but the timing was little different. Like early in the morning we need to go, and then the later at the evening we need to come back. But my father was interested that I should choose a field where like the timing should be as per the convenience. So
to by keeping that thing in mind, then I thought, let me start my career as a teacher, because I wanted to lead basically. When I started my career as a teacher, then later on I realized teaching is really very good profession, but then I realized that I have to lead a team, because a lot of ideas are there in my mind, so I can implement that ideas when I'll have some authoritative position. So gradually in my teaching field, I started working towards my administrative field also, and luckily I got the chance also to become the administrator. So I think so. This is the best way. If some profession, if you choose by, by sometimes you are into a profession when there is a, by chance. But later on, if you adopt this thing that now you are into this profession, now you have to grow, then you can make it by choice also. सो टीचर बनना बाय चांस बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था कि मैं बनना नहीं चाहती थी, बट लाइक आई वांटेड टू बी इन वन ऑफ द एमएनसी. बट जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन में आकर देखा तो मुझे इससे ज्यादा नोबलेस्ट प्रोफेशन कोई और लगा नहीं. देन आई थॉट दैट इट इज द बेस्ट प्रोफेशन वेयर आई कैन ट्रांसफॉर्म अदर्स लाइफ ऑल्सो. सो दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन. मैम आपकी तरफ से सक्सेस की डेफिनेशन क्या है मैम? जैसे कि आजकल हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि वो प्रोफेशन जो है बहुत सक्सेसफुल है, वो लोग बहुत सक्सेसफुल हैं. मैम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस फॉर यू? If I talk about success, everyone is having his or her, targets. Sometimes people think if you get a lot of money by one profession, then they think that they are successful. Sometimes people have other parameters to, to judge the level of success. According to me, if you are happy, if you are sleeping peacefully, if you are satisfied with the work which you are doing, it means you are successful. So according to me, if you at night, if you are at peace, and if you think that you did something good for others, then it means you are happy and you are successful. मैम अगर अभी आपकी लॉटरी निकले तो आप उन पैसों से क्या करना पसंद करेंगे? I love to purchase jewelry. Being a girl, everyone is interested to have, because I'll not make very, very wrong statements here, because I'm also a normal human being. So I love to wear very good clothes. I love to wear good jewelry, as well as I would love to spend some money I would love to give some money to needy people who requires it actually, not for showing, but wherever I think that this person is in need, I would love to help that person. And traveling abroad, as I told you that I love to see different places, not only abroad, in India also, I love to travel different places. I need to know the different cultures. So I will utilize that money with that, in that kind of works. Ma'am, so now to make this interview more fun and interesting, we will play a fun rapid fire round with you. Oh my God. You need to know me, huh? Very smart kids. So in which I will ask you questions and you have to answer them immediately in a word or phrase. Okay. So let's begin. What was your first job? Teaching. What is your favorite color? Yellow. What is your favorite song? There are many songs, as per my mood. My song is favorite. If I'm in a sad mood, I love to hear sad songs. But if I'm in a funny mood, then I love to hear joyful songs. If I'm in romantic mood, then I love to hear romantic songs. Ma'am, your favorite movie? Three Idiots. Ma'am, what was your favorite subject in school? Mathematics. Ma'am, what is your favorite leisure time activity? Leisure time activity, either watching TV or sleeping, sometimes video games also. Ma'am, what word do you have a hard time pronouncing? Hard time pronouncing? Yes, ma'am. Phenomenon. How would you describe yourself in 3 words? Adorable, Anu. And 3 words you said, yes, na? I'm very punctual, dedicated, and whatever I decide that I have to do, then I really do it. Then I don't allow any consequence to come in between, because if I have made my mind that I have to complete this task, then I always do it. So I'm very passionate about my work. Ma'am, what nickname did you had as a child? Anu. My full name is Anuradha, but people or my brothers, like, they all used to call me Anu. Ma'am, what would you name your autobiography? Life of a girl who want to be independent at very early age. Who wanted to be independent at very early age. I got independent in the sense, if I talk about monetary terms, child feels independent when he or she starts earning.
Then at the age of 17, I started writing some kind of books, some kind of articles. So I started earning at very early age. So that's why I can say that my independence started from the age of 17. Ma'am, what were you afraid of as a child? I was never afraid of anything because my family was very supportive. So, and I was very adventurous. You know, sometimes I would like to share here one incident. जैसे बच्चों को पानी से डर लगता है, कई बार कहीं बहुत ज्यादा पानी हो तो बच्चे जर्नली पानी से डरते हैं, बट आई वॉज वेरी मिस्टीवियस काइंड ऑफ चाइल्ड. वन डे माई मदर वेंट समवेयर, और घर पे वो जो पानी का टंकी होता है ना, मी एंड माई ब्रदर्स लाइक वी वर वेरी नोटोरियस. तो हम तीनों घर पर थे और मम्मी मार्केट में कहीं किसी काम से गए, हम बहुत छोटे थे. तो फिर हमने वो पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर इतना शोर मचाया, और सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली मैं थी कि मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ. और बाहर वो पूरा पूरा होल स्ट्रीट गैदर्ड कि घर में बच्चों को कुछ हो रहा है. When my mother came, then she got scared कि इतना रश क्यों लगा हुआ है उनके घर के बाहर. तो it was me, the drama girl, I was just screaming, shouting, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. And the house was locked from outside, like people were gathered कि ऐसा क्या हो रहा है इनके घर में, और घर के दरवाजे भी बंद हैं. तो but suddenly my mother came, and then we got lot of scoldings also later on. Ma'am, do you have any hidden talent? Yeah, I am a bathroom singer. I love to dance, but not in public. Basically, मुझे वो जिस ऐसा डांस करना पसंद है जिसमें कोई बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं होते, मतलब फ्री स्टाइल डांसिंग. So I think so I am good at it. Ma'am, we know that you are very fluent in English and Hindi, but like अब आपको काफी टाइम हो चुका है पंजाब में, तो हम आपसे कुछ पंजाबी में सुनना पसंद करेंगे. We would love it. बड़ा चंगा इंटरव्यू है. कुछ कुछ वर्ड्स मुझे पंजाबी के आते हैं, मतलब आई एम नॉट वेरी फ्लुएंट इन पंजाबी, बट आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली इटसेल्फ. तो जब मुझे एक दो डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं पंजाबी के, जब शुरू शुरू में जैसे यहाँ पर कोई हम मीटिंग करते थे, तो जो पंजाबी में एंकरिंग करते थे, तो वो लोग ऐसे बोलते थे जी आया नू. तो आई रियली लव दैट जी आया नू, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स. एंड पंजाबी इज अ गुड लैंग्वेज, थोड़ा अपनापन लगता है पंजाबी में वो सुनकर. और माय इन-लॉज आर वेरी हैप्पी बिकॉज दे आर टिपिकल पंजाबी. दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज आई यूज्ड टू स्पीक ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश एट होम, but now when I go there, so automatically some words from Punjabi also comes out, so they feel very happy ki now she is proper Punjaban. Thank you, ma'am. It was a very fun session. Now moving ahead. Ma'am, now we will move towards our next session named qualitative questions, जिसमें हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स को कहा कि वो अपने अपने क्वेश्चंस के साथ आएं जो आपसे पूछने में इंटरेस्टेड हैं. Oh, it was a well planned session, it means, huh? Okay. So ma'am, here we go. Your first question. Good wishes for you always, ma'am. I would like to ask you, how long do you predict your journey? I mean, what more are you looking forward to at this position? See, if I am a principal of a school, my first motive is that each and every child of my school should be independent, confident, and they should get well settled in their life. So whatever I can give, whatever I can contribute in their journey, that will be my priority. Sometimes children come to me to have the guidance regarding their career, so I really love to give that guidance. Whatever information I have, I always try to impart that information to the child. And sometimes in some different fields, even if I'm not having any knowledge, but I try to collect that information and I try to give that information to the students, because if God has given us this profession, then it is our moral duty, we should give our 110% to help children. So that is what I look here. Like if I'm a principal of a school, if I'm catching the 3100 students here, then I want that each and every child should be capable enough of having a good living in future. So this is my main motive. Ma'am, your next question. Good evening, ma'am. I am Shaurya from class 5th E. I have a question for you that what quality do you look for in a perfect student? Thank you. First of all, children should come with a smiling face to the school. Means they should be ready learners. They should not come forcefully in the school. They should feel
happy when they are coming to the school. Secondly, whatever assignments we are giving to them, they should fulfill that assignments wholeheartedly, because I love kids those who are confident. I love kids those who understand their responsibility. That is why I always tell in morning assembly that do whatever you want to do it wholeheartedly. So I think so in students life the most important thing is to learn new and new things, to experiment new things, because here if you are experimenting anything, teachers are always there to guide you, because you cannot go at the wrong direction because teachers are supervising you. So that is what I would love to see in the kids, that they should come with different ideas and they should experiment new things under the guidance of teachers. Ma'am, next question. Greetings, ma'am. I'm Hasmita from +1 Medical. Ma'am, I have a question for you. मैम आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा मोमेंट होगा व्हेन यू विल फील कि इससे ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लिए हो ही नहीं सकती? लाइक व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस फॉर यू? काइंडली लेट अस नो. थैंक यू मैम. Happiest moment in my life, as I told you, because I feel happy when the people around me are happy. But if they are passing me the negative energy, then I really feel very bad. So my happiest moment would be if I'm at home, my family should be happy. If I'm at school, the teachers, the students, those who are around me, they should feel happy and contented. They should feel free to talk to me. They should find the solutions if they are coming with any of the problem. My purpose is to give them the proper solutions. Then only I feel happy. So whatever I am doing, I should find the happiness in that only. So that is why I can say, love yourself, love whatever you are doing, then only you can find the happiness. Thank you, ma'am. It was a very interactive and informative session. Thank you so much. मैम, जैसा कि हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं और उनकी बहुत सारे लेक्चर्स मिस हो जाते हैं, इसकी वजह से उनके एकेडमिक रैंकिंग भी अफेक्ट होती है। मैम, हम ऐसे कौन से स्टेप्स स्कूल से एक्सपेक्ट करें कि उन स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके? See, these days, if you want to get success in your life, only academic scores will not work. No doubt, academic scores are very, very important, but overall development is very important. Like if you are conducting this interview today, I am sure that you might have learned so many things which are not in the books. So these kind of things are also very important. So first of all, I would like to say that if you are getting involved in any kind of extracurricular activity, then you should understand the responsibility also that you need to manage whatever the syllabus is missed during this activity time. You should try to do that syllabus yourself. You can always take the guidance from the teachers, and teachers also should take care of this thing. They should provide them proper notes, as well as they can provide them some online kind of thing, online classes in the evening, or some telephonic guidance also they should give, so that children should not suffer. And moreover, this time, if I say that child is learning everything while being in the class only, then we will be wrong. Self study and self acquiring of knowledge is very, very important. So I think so children should be smart enough. If they are skipping any of the class or if they are missing any of the class, they should try to cope up with the help of other teachers, with the help of. मैम, जैसा कि हमें पता है, हमें समर वेकेशन में हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है, तो लेकिन हमें ये भी पता है कि मैक्सिमम वो आउटसोर्स करवाया जाता है या फिर पेरेंट्स से किया जाता है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हॉलीडे होमवर्क थ्योरेटिकल की जगह प्रैक्टिकल बेस्ड हो, कि स्टूडेंट्स खुद मोटिवेटेड फील करें उसे करने के लिए? और आपके इस पे क्या ओपिनियंस हैं, और क्या हम स्कूल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसा हॉलीडे होमवर्क हमारे लिए प्लान किया जाएगा? I think so in DAV we are giving such kind of homework. I have already given instructions to the teachers that homework should not be only theoretical, it should be practical based, and I think so teachers have already given such kind of projects. And moreover, मैं parents को भी ये कहना चाहूँगी, assist your child to do the homework, but don't do it yourself. पेरेंट्स बच्चों को असिस्ट जरूर करें, गाइडेंस जरूर दें कि होमवर्क करना कैसे है, बट बिल्कुल होमवर्क खुद बिल्कुल भी मत करें, बच्चे को असिस्ट करो. वी कैन ओनली शो द पाथ टू द चाइल्ड, बट वी कैन नॉट होल्ड द हैंड फॉर होल ऑफ द पाथ. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये जो हॉलीडे होमवर्क है ये बच्चों के लिए है. बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाए कि कहाँ से उनको रिसोर्सेज मिलेंगे. उनको हम बुक्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, एंड टीचर्स भी उनको बच्चों को कभी कभी टेलीफोनिक गाइडेंस भी दे सकते हैं. और अदरवाइज क्लासेस में भी टीचर्स को ये बोला गया है कि आप हॉलीडे होमवर्क देने के बाद एक्सप्लेन जरूर करो कि उसमें बच्चों को प्रॉपर्ली करना क्या है, ताकि बच्चे फुल ऑन इन्फॉर्मेशन के साथ घर पर जाएं
और अपने हॉलीडे होमवर्क को खुद करें और खुद ही नई नई चीजों को सीखें। मैम लाइक जैसे हम देखते हैं हमारे बुक्स में पोएम्स होती हैं, कोई मदर्स डे कोई भी फंक्शन आता है तो अगर हमें कोई भी प्रेजेंट करना होता है तो हम यूजुअली इंटरनेट का हेल्प लेते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हमें 3 पोएम्स पढ़ाई जा रही हैं तो हमें ऐसा हो कि एक पोएम हमें लिखने को कहा जाए कि हम खुद अपने एक्सप्रेशंस कैसे बयां कर सकते हैं पोइट्री में? ऐसा कुछ एकेडमिक एक्टिविटी नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए स्कूल में? बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज अगर बच्चे अपना एक्सप्रेशन खुद नहीं दे पाएंगे, दूसरों के एक्सप्रेशंस पढ़ना एक अलग बात है। लाइक अगर हम पोएट्री की बात करें तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोएट्स ने अपने एक्सप्रेशंस बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किए होते हैं, बट पर्पस हमारा उन एक्सप्रेशंस को सिर्फ सुनना और समझना नहीं है, उन एक्सप्रेशन से हमें सीखना है कि हम अपने एक्सप्रेशंस कैसे दे पाएं, किसी भी चीज की फीलिंग को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाएं। तो जितने भी हमारे ये पोएट्स हुए तो उन्होंने ये जो पोएम्स लिखी हैं वो इस वजह से नहीं लिखी हैं कि सिर्फ आप उनकी पोएम्स को पढ़ें, वो इस वजह से लिखी है कि जैसे वो अपने एक्सप्रेशंस को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, आप लोग भी उसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो सीखें। तो मैं ये रिक्वेस्ट टीचर्स से भी करना चाहूंगी कि हमेशा बच्चों को वो इस तरह से मोटिवेट करें ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव बने। Recently, like yesterday only, we had an exhibition and I was very happy to see that exhibition because उसमें सिर्फ बच्चों ने कार्डबोर्ड से थोड़ा सा, अगर हम कहें सिर्फ पेंटिंग्स की हुई थी, तो ऐसा नहीं था। They have tried to express their feelings, so that was the most important thing। जब बच्चे अपने अंदर के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो जर्नली वो ऐसा कुछ सीखते हैं जो बुक्स में नहीं सिखाया जाता, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोएट्री की भी अगर मैं बात करूं तो सेल्फ कंपोज्ड पोएम्स बच्चों के लिए जरूर सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए और बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए कि वो किसी भी टॉपिक पर अपने एक्सप्रेशंस को दे पाएं। तो आई विल मेक श्योर कि हम इस सेशन में कुछ इस तरह का कंपटीशन रखें ताकि बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को अच्छे से पोएटिक वे में एक्सप्रेस कर पाएं। मैम अगर आपको मौका मिले किसी के साथ फोटो खिंचवाने का तो आप किसके साथ खिंचवाना चाहेंगे? Top secret, huh? Are you talking about any film star or the people around? Anyone. Anyone. I love everybody. I love to have photograph with each one of the student here because like in my tenure I have been experiencing students since last 20 years. तो शायद आप लोगों को पता होगा, मैंने असेंबली में बोला था कि आई वुड लव टू गिव सर्टिफिकेट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। वो पर्पस मेरा यही है कि जब बच्चा स्टेज पर आए मुझसे सर्टिफिकेट ले और उसके पास जो ये मेमोरी होगी, मतलब दैट विल बी फॉर होल ऑफ द टाइम। लाइक वी हैव बीन कैटरिंग स्टूडेंट्स सिंस लॉन्ग, बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइफ में आए, बहुत सारे चले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बैच आएगा, लाइक बट स्टूडेंट की लाइफ में वो जो टेन्योर है वो उसका होल टाइम मेमोरी में रहेगा कि यस हमने प्रिंसिपल मैम के साथ फोटोग्राफ क्लिक करवाया था। तो ये मैं चाहती हूँ कि इस तरह की मेमोरी मैं सभी बच्चों को दे पाऊँ ताकि वो बच्चे जब भी मुझे अपनी लाइफ में याद करें, मे बी आफ्टर 10 years 20 years, तो दे शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इन द माइंड, यस वी डिड दिस थिंग गुड, दैट इज वाई वी गॉट प्राइज फ्रॉम मैम, दैट इज वाई वी गॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम मैम। और वो आके मतलब आगे अपने बच्चों को भी दिखाएं कि देखो मुझे भी प्राइज मिलता था प्रिंसिपल मैम से, और मैं वो हैप्पीनेस देना चाहूंगी सबको। Ma'am, which leisure time activity will you suggest students in order to enhance their overall adaptability and compatibility? Reading newspaper, reading different kind of books, magazines, otherwise we don't suggest that you lie down and read all these kind of things, but sometimes if you are getting lazy and sometimes you don't feel like sitting on a chair and table, if you're lying somewhere, then you can read for books for 10 to 15 minutes for half an hour, so you will feel good. So children should have interest in reading different kind of fictions and stories, so it will definitely enhance their critical thinking skills as well as it will enhance their vocabulary. So these kind of things they can do. So ma'am, now moving towards the end of this interview, we would like to end the interview with our last two questions. So ma'am, how would you like your students to remember you? Like हम देखते हैं कि पर्टिकुलर पर्सनालिटीज के लिए सोसाइटी में परसेप्शंस बनी होती हैं, लाइक हिटलर एक डिक्टेटर है, गांधी जी फिलोसोफर, फ्रीडम फाइटर, वैसे हाउ वुड यू लाइक पीपल टू रिमेम्बर यू? If I talk about the positive aspects of mine, so as the students are already telling that I am passionate about my work as well as I'm always keen to learn new things, so I think I should be the role model in front of students that I am taking care of everything, like I'm enhancing my knowledge by learning different kind of things, and I'm enhancing my experience by doing different kind of activities.
I'm maintaining myself, I'm taking care of my health. So I think so children should learn from the personality as a whole, that I'm taking care of my physical as well as mental health, and children should learn from this. And they should also work on their physical fitness as well as on their mental health, so that they can excel in their life. Last but not least, ma'am, what message would you convey our audience or students watching this interview? Life is very beautiful. So this is my message. Don't take it so seriously. Childhood is meant for learning new things as well as for enjoyment. We should know how to make the balance between both the things. We should enjoy our life as well as we should learn new things, because this is the best time when you can enjoy and you can learn so many good skills that will definitely help you in your future life. So the message to all my students, it's very old saying if we say that hard work is the key to success, but now there are many keys to success, including hard work, your constant efforts, as well as your passion. So you need to have different kind of keys in your hand to open the lock of success. So मैम, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Same here. और मैम धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। Thank you so much. In fact, I really loved to be here, because if people will see this interview, then I'm sure definitely they are going to learn something or the other from it. And I'm always there to help my children here. If in case if they need any kind of guidance or assistance from my side, I would love to help them. Thank you so much for conducting this interview. Thank you. तो आज यू मी और हम के सफर में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत और नई हस्ती के साथ।